Assalamualaikum everyone. मेरा नाम है Ayesha Nawab and I'm a trainer and consultant with Carnelian. The theme of today's day and the theme of my session is also unity in diversity. So again, before I jump into the theme for the day, I'd love to entertain as many questions and I hope that a lot of them keep coming, as many questions and as many comments. Again, I represent an organization called Carnelian. For those of you that haven't interacted with any of our trainers from Carnelian, I'd like to first introduce my organization to you. So, Carnelian essentially is a communications consultancy. We try and wherever and whatever it is that we do, हम कोशिश यही करते हैं कि we are able to convey meaning and create significance. हम कोशिश ये भी करते हैं कि जिन लोगों के साथ हम interact कर रहे हैं on a day-to-day basis through our sessions or through our assignments, they are able to also convey meaning and create significance through what they do. We are in the services of learning solutions, which is basically training and communications. We are also into management consultancy services, tech solutions, and development and CSR. Carnelian, for those of you who don't know, is actually Angrezi for the red stone Akeek. Akeek is also called the public speaker stone, so you can imagine कि ये कितना ज़्यादा हमारे लिए इसकी symbolization कितनी important है. So now, obviously, moving towards our theme for the day, which is unity and diversity. And again, it's very interesting because आज हमारा Independence Day भी है पाकिस्तान का, and it's a very very fitting. I feel it's a very fitting theme for the day because Pakistan as a country is obviously very very rich in diversity. So it's a very fitting and a happy Independence Day to all of you also. And before obviously we move forward with the session, I'd just like to talk a little bit about this theme. So unity in diversity is very interesting because it joins two complete opposite words in the same sentence. So it's an oxymoron. And unity obviously means single or one, and diversity obviously means variety. So it's actually इसके जो roots हैं, that is actually a political motto which advocates multiculturalism. और इसका essence ये है कि अगर आप diversity को fully embrace करते हैं and diversity को fully accept करते हैं तो nobody can come and do anything with you. So basically nationality का concept है ये कि आपकी nation becomes virtually unbreakable if you accept, embrace and leverage the differences that are prevalent in your country. So again, अगर हम इसको अपनी theme में और अपनी जिंदगी में accept करने की कोशिश करें, so we can see that there's a lot of diversity around us within Pakistan, और हम इसको celebrate तो हर साल करते हैं. लेकिन do we actually leverage those differences? Do we actually celebrate those differences? And that is what today's session is all about. Now, what I'd like to actually speak about is also COVID-19 का पूरा crisis. लोग कहते हैं कि यार DNI जो है ना redundant बन चुका है. जब से हम लोगों ने COVID-19 और ये सारी चीजों में हम लोग आए हैं, तो of course it's no longer a redundant. It's become a redundant concept because पहले इस पे बहुत ज़्यादा investment भी organizations कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी. लेकिन अब जो है we have more pressing issues at hand. So there's issues related to revenue. There are issues related to different things. लोगों को आप निकाल रहे हैं नौकरियों से, कल्चर का समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, एंड लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त यार हमारे पास DNI का टाइम. But think about it like this: time हमारे पास क्यों नहीं है DNI का? If you think about it, then organizations that will cut back on DNI initiatives, they are not going to be able to progress the way they should progress. क्योंकि in the long run आपको diversity की ज़रूरत पड़ेगी in your organizations to recover yourself, to reimagine businesses, to come up with newer methodologies to work. अगर आप नहीं करेंगे इसके अंदर invest और अगर आप छोड़ देंगे इन सारे initiatives को, तो you will fall behind. Customers आपसे खुश नहीं रहेंगे, talent भी आपसे खुश नहीं रहेगा, and you will lose out on your competitive advantage. Eventually, inshallah, when we are done with this COVID-19, inshallah, very soon, when we're done with this COVID-19 wave, business will resume. We will need newer methodologies and newer practices in order to make sure कि हम आगे बढ़ सकें और अपना competitive advantage दोबारा से maintain कर सकें. So it's a very
critical time for business leaders. I mean, I understand as a strategic priority, this might shift, but it is a very crucial time for business leaders to show that they are now bolder than ever. Why is this again important? Important ये इसलिए है because हम लोग वॉर ऑफ टैलेंट जो है ना हमारी, हम लोग ज्यादा टैलेंट को अक्वायर कर पाएंगे इफ वी स्टिल इन्वेस्ट इन डीएनआई पॉलिसीज. फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फ्रॉम होम, पहले हमें लगता था ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती हैं यार, लेकिन अब हो रही हैं, सब के सब कर रहे हैं. एंड इट्स ओपन अ कम्प्लीटली न्यू एवेन्यू फॉर ऑल ऑफ अस कि यार अच्छा, okay, this is one way of working as well. So of course that is one thing जो हम लोग, we will have access to a lot more talent. उसके अलावा we will be able to anticipate customer shifts. ट्रेंड्स चेंज हो रहे होंगे, चीजें चेंज हो रही होंगी, और जितनी अडेप्टिव आप होंगे as a team, you will be able to capitalize on those changing trends. You'll be able to come up with newer methodologies, be able to take different decisions, quicker decisions also sometimes. And uske alawa, you will be able to retain your corporate image. um ko agar aap, if we fall behind on the curve and if we're not able to capitalize on all of this, then we will be at a strategic disadvantage in the future. I was actually going through a study. McKinsey ने वो स्टडी कंडक्ट किया, एंड इट्स अ वेरी रीसेंट स्टडी, मई में ही कंडक्ट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम लोगों ने डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस नहीं किया, अगर हमने छोड़ दिए ये सारे इनिशिएटिव्स, तो एज ऑर्गेनाइजेशंस वी विल बी लूजिंग आउट. Again, there's a lot of data which is available ऑन द इंटरनेट, ऑन गूगल. आप बस लिखें और आप ये देखें कि डाइवर्सिटी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो आपके पास इतना डेटा आ जाएगा, बेतहाशा डेटा आ जाएगा. बट व्हाट आई वांट टू एसेंशियली फोकस ऑन is the behavioral shift which is required to actually embrace diversity in its essence. कि अच्छा हम लोग डाइवर्सिटी को embrace कर सकते हैं fully, और उसको किस तरह से हमें leverage करना चाहिए, and what are some of the things that are stopping us from fully embracing diversity. So now, what I'd like to talk about a little bit over here is our natural tendencies. तो होता usually हमारे साथ ये है कि जब हम किसी से पहली दफा मिलते हैं for the first time, so we judge them on the basis of what they are as opposed to who they are. This basically means कि हम लोग उस बंदे से उसके एक्सटीरियर के बारे में, उसको एक्सटीरियर को देख के judgments pass करते हैं. So what language are they speaking? How are they dressed up? What is their profession? What is their social standing in society, for example? So इन सारी चीजों को हम लोग देख के we kind of make our judgments about a person. And this more commonly is known as our bias. Bias is a word that everybody, I think, is familiar with. And चक्कर ये होता है और प्रॉब्लम तब आती है जब आप डिसीशंस बनाते हैं इस बायस के ऊपर. And normally this is completely unconscious, hence the term unconscious bias. So हम जानबूझ के अपनी judgments या अपने decisions इन लोगों के बारे में इस bias के ऊपर बेस करके नहीं बनाते. Having said that, that is what's happening more often than not, which is why हम बोलते बहुत हैं कि यार diversity जबरदस्त, और diversity is the way to go, and diversity पे sessions कराओ, लोगों को sensitize कराओ. लेकिन when it comes to our natural conditioning, we are not able to actually embrace diversity the way we should be embracing diversity. तो ये अनकॉन्शियस बायस क्योंकि हमारे जहन में आता है. अब कभी कभी ये अनकॉन्शियस बायस जो है, इट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग एज वेल. सो ऑब्वियसली हमें सिखाया जाता है बचपन से ही कि बुजुर्गों की हम लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो अनकॉन्शियसली वी आर डूइंग दिस. हम लोग हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर कोई अगर डिसेबल्ड है तो उसको और आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, तो वी आर going to be providing them with those opportunities, which is all great. But more often than not, it is not, I would say, positive. इसका रिजल्ट और इसका इम्पैक्ट नहीं होता, इसका रिजल्ट यूजुअली नेगेटिव ही होता है. सो फॉर एग्जांपल, अ प्रेग्नेंट वुमन, सो यू डोंट एंड अप promoting a pregnant woman because वो आगे जाके ये काम नहीं कर पाएगी, तो यार उसकी प्रमोशन शायद हम रोक दें. कोई बंदा आता है आपके पास and he is very skilled in his profession and all of that, लेकिन क्योंकि उसकी अंग्रेजी खराब है, हमें लगता है कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है और इसको तो कुछ आता ही नहीं है, and we pass judgments on the basis of that.
this in essence is a very डेंजरस टेरिटरी टू बी इन, बिकॉज हम लोगों को कैपेबिलिटीज के ऊपर नहीं जज करे, वी आर नॉट गेजिंग कि अच्छा इनकी पर्सनैलिटीज किस तरह की होंगी, लेकिन जो हमें बाहर बाहर एक्सटीरियर पे नजर आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसीशंस बना लेते हैं, विच एक्चुअली स्टॉप्स अस फ्रॉम एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी. अब मसला ये है कि ये ऐसा क्यों होता है, why are we just passing our judgments on the basis of these external things? That's because we have been taught also, and this is also our survival instinct. Okay, we are more, we gravitate towards people that are most like us and that are more, similar to us. So familiarity हमारे लिए एक safe zone है. अगर हम इस सेफ जोन से बाहर निकलते हैं तो दैट इज ऑलवेज अ डेंजरस टेरिटरी फॉर अस. सो हमारी कंडीशनिंग इस तरह की हुई भी है कि वी आर सपोज टू एम्ब्रेस पीपल लाइक अस एंड एक्सेप्ट पीपल लाइक अस. लेकिन अगर जरा सा भी हमसे कोई डिफरेंट आ जाता है हमारे सामने तो नेचुरली हमारा रिस्पॉन्स ये होता है कि हम उनको रिजेक्ट कर दें और हम उनको मतलब उनको फुली एक्सेप्ट हम at the get go नहीं कर पाते. So it's a survival instinct also, and that's what we've been taught. तो इसमें वो पूरी वो नेचर की आर्ग्यूमेंट आ जाती है कि हमें बायसेस बचपन से थोड़ी पता चलते हैं, बट इन एसेंस ये बायस थोड़ा सा, like I said, it's a survival instinct, so it is your natural response. So you're naturally inclined to reject diversity as opposed to accept diversity. बहुत सारी, there's lots of nationalities, there's lots of different people जिनकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी फर्क होती है, तो हम उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी कंडीशनिंग हमसे थोड़ी सी फर्क होती है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस they do end up accepting diversity more readily than perhaps we are, because we come from a nation जहाँ पे हमें सिखाया तो जाता है कि आप सेलिब्रेट करो डिफरेंसेस को, but when it comes to taking decisions, when it comes to accepting people that are different from us, it is not that clear cut, because as we all know हमारे मुख्तलिफ माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, हमारे मुख्तलिफ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें हमें होता है कि यार ये तो ऐसा होगा और ये तो पठान तो ऐसे हैं और लाहौरी तो ऐसे हैं. I mean, I'm a Karachiite, so no offense to Lahoriites, I actually love them, but there is this huge tussle between the two cities also. So essentially there is just so many differences जिनको हम लोग और जिसके बेसिस पे हम लोग वो जजमेंट्स पास ऑन करते रहते हैं एंड वी डोंट एक्चुअली नो कि कब ये एक हम डेंजरस जगह पे जा रहे हैं, because seemingly it's all innocent but it's really not, because you end up jumping to conclusions and making assumptions that are perhaps not even there. So again, what I'd like to now kind of address is कि ये हमारी behavioral tendencies हैं. So these are some tendencies that all of us have. कि अच्छा यार बस judge कर लो on the basis of how a person is and how they are looking and what हमें बाहर बाहर, because हमारे पास टाइम भी नहीं होता, हम कहते हैं यार why make that analysis about someone, मतलब जब पता ही है और हमें लगता है हम बड़ी intuitive decision making कर रहे हैं, but actually हम intuitive decision making बिल्कुल भी नहीं कर रहे. What are some of the things that we can do in order to ensure कि हम इस bias से गुरेज करें? देखिए बिल्कुल bias तो eliminate नहीं हो सकता. This is something that we must accept. We have been conditioned. इतने सालों से आपकी conditioning होती है तो उसको जाहिर सी बात है हम लोग फौरन से तोड़ नहीं सकते. But there are certain steps that we can take in the short term that will perhaps help us to minimize the effect of those unconscious biases on our decision making. So इसका सबसे पहला जो step होता है, that is to take a pause. Just take a pause and deliberately slow down your decision making and the decisions that you are going to take. आप ये pause ले लेंगे और सिर्फ सोचेंगे कि अच्छा यार मैं ऐसा तो नहीं है कि I am jumping to some kind of an unnecessary conclusion. Okay, I'll just take that pause, I'll take that break, and then I'll see and reanalyze and reassess the situation. उसके बाद you reconsider reasons for the decisions that you're taking. आप इस बंदे को क्यों हायर नहीं करेंगे, या फिर आप इस बंदे को क्यों प्रमोट नहीं करेंगे, या फिर why are you making this assumption कि इस बंदे की टेक्निकल एबिलिटी तो है ही नहीं just because उसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है. So you start re-evaluating, your decisions and why you're taking those decisions. उसके बाद you question cultural stereotypes.
again, this English example, I think I'm going to keep on referring back to it. It's ऐसा एक ये example है क्योंकि ये हम बहुत दफा कर देते हैं. I mean, in our society, अंग्रेजी पे इतना emphasis किया जाता है, इतना emphasis किया जाता है कि we actually think that it's a proxy for intelligence, whereas that is not the case at all. So we need to question these stereotypes again and again. um उसके बाद we need to monitor and look out कि कोई और तो अपने ये unconscious bias को आने नहीं दे रहा अपनी decision making में. Sometimes we need to make really crucial decisions, जैसे शादी related decisions होते हैं हमारे, या फिर हमें किसी को hire करना पड़ता है at a very crucial point, and we let our biases actually affect how we think. So in the short run, these are some of the steps that we can take. I'm going to reiterate those steps again. Take a pause, reconsider reasons for decision making, monitor each other for the unconscious bias, and question different cultural stereotypes. ये चार reasons अगर आप consciously इनको follow करेंगे तो I'm not saying कि आपका bias बिल्कुल eliminate हो जाएगा, but you will be able to perhaps rise above and reassess a decision that you may have made on a completely baseless assumption. तो एटलीस्ट आपका वो एक प्रोसेस किक होना शुरू हो जाएगा. सो ये तो कुछ चीजें हैं जो आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म में लेकिन आपको, ताकि ये आपकी एक आदत बन जाए, what are some of the things that we can do in the long term? So in the long term, what we must do is engage in more and more giving behaviors. Giving behaviors is again something which is deep rooted in our intent. और हमें अपनी इंटेंट को अब एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि we do not succumb to our biases. So again, I would like to share a model which I think has Assalamu alaikum, Atif आ गए हैं हमारे पास. Atif, please share your questions and your comments also, please. I'll be watching out, and in case I am not able to kind of फौरन से अगर मैं नहीं आपका वो कर सकूं, क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, चले ठीक है, नहीं करूं उर्दू में बात. अच्छा जी, I'll try to stick to one language. That's very difficult because हम अपनी training sessions में भी हम लोग यही करते हैं कि we are bilingual most of the time. So I will try to stick to one language. I'll do that for sure. ठीक है, जबरदस्त. Okay, so I was talking about exploring our intent, which is deep rooted. Intent को अगर आप जरा सा गौर से देखेंगे और explore करेंगे, तो hopefully you'll be able to engage in more giving behaviors in the future. So again, I'm going to take reference from a model by Etsko Skitema. It's called the intent model. And इसमें basically होता ये है कि आप कोई भी action जब लेते हैं, so it will either lead you to succumb to your bias, or it will either lead you to overcome your bias. और अगर आप इंटेंट की अब बात करते हैं और अगर आप इंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं तो ये देखें कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू ऑपोजिट एंड्स. एक आप समझ लें एक नेगेटिव है, मतलब इस साइड पे आप समझ लें एक नेगेटिव इंटेंट चल रहा है, और इस साइड पे आप समझ लें कि पॉजिटिव इंटेंट चल रहा है. तो नेगेटिव इंटेंट क्या होता है? नेगेटिव इंटेंट इज बेसिकली व्हेन एवरीथिंग दैट यू डू इन दिस वर्ल्ड इज विद द इंटेंशन ऑफ satisfying you and yourself. So it's incredibly selfish, बहुत ही selfish और animalistic in nature है ये वाली इंटेंट. जो आपकी पॉजिटिव इंटेंट है, दैट इज योर गिविंग इंटेंट. यानी कि आप हर चीज जो भी आप करते हैं वो इस नियत से करते हैं कि किसी दूसरे का भला हो जाए. So ये आपका पूरा एक स्पेक्ट्रम है. Now again, human beings, they fall somewhere in the middle of the spectrum. उसी का भी कोई extreme नहीं होता है. तो human beings usually fall in the middle of the spectrum, और उन्होंने ये decide करना है कि do we fall more towards the negative intent or do we fall more towards the positive intent. यानी कि आप ज्यादा taking intent को display कर रहे हैं या ज्यादा giving intent को display कर रहे हैं. So this is something that again, as human beings, we have to decide for ourselves. Now, how can we make these decisions? हमें ये पता है कि resources in this world are largely limited. So when resources are largely limited, और अगर बार बार आप taking intent को display करते हैं, तो you end up fighting for those resources. You end up competing for those resources. उसी के बरक्स, if you are going to be displaying giving intent,
then you will think about sharing those resources or serving other people with those resources. Now again, I'd like you to come back to the competition part. अगर आप resources के लिए हर दफा compete करेंगे, तो think about some of the tendencies that you are going to face and some of the feelings that you are going to experience at that point in time. आप fear को experience करते हैं, आप anxiety को experience करते हैं, आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. So उसी के बरक्स, if you are going to share your resources, you are going to feel happier, you are going to feel more content, you are going to feel even more powerful, because if you are going to share your resources with other people, then naturally आपका दिमाग खुलने लगता है. सो अगेन, कंपटीशन होगा तो फियर बढ़ेगा, और जब फियर बढ़ता है तो आप अपने सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और सर्वाइवल माइंडसेट में चले जाते हैं, जिसका हमने अभी पहले भी जिक्र किया था. तो जब आप सर्वाइवल माइंडसेट में जाते हैं, देन व्हाट एंड्स अप हैपनिंग? व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट यू एंड अप succumbing टू योर biases. उसी के बरक्स, if you are going to share your resources, if you are going to help other people with your resources, so you feel happier, you feel more content, you feel like your brain is opening and you go on to solution mindset, and there are more chances that you will be able to overcome your bias or conquer your bias. So again, what can we do in order to make sure कि हम ये biases, इनके पीछे हम लोग अगर इन biases का ये शिकार ना हो, is to ensure that we indulge in more and more giving behaviors in the long run. Okay, Maria Babar का सवाल आया है, what if you fall more towards positive intent and literally majority of the people around you let you down and manipulate you? Okay, Maria, this is a very ये बड़ा एक ऐसा सवाल है जो I think in a lot of our workshops also भी ये question हम लोग को मिलता है, and this is very natural. टू थिंक दिस वे कि हम लोग तो इतना ज्यादा करते हैं और कोई जो है हम लोगों को देखता नहीं है और ये नहीं देख रहा कि हम कितनी एफर्ट डाल रहे हैं. इसका शिकार मैं भी होती हूँ और हम सब होते हैं. अगेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर बायसेस. दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन कंडीशनिंग हमें ये बताती है कि यार लोगों के लिए करना चाहिए और करना चाहिए, मगर कंडीशनिंग हमें ये भी बताती है कि नेकी कर और दरिया में डालो. तो ये भी कंडीशनिंग हमें बताती है, ये भी कंडीशनिंग हमें सिखाती है. सो अगर आप गिविंग नहीं करेंगे, अगर आप अपने गिविंग बिहेवियर्स में इंडल्ज नहीं करेंगे, अल्टीमेटली व्हाट्स गोइंग टू एंड अप हैपनिंग इज दैट योर ब्रेन विल क्लोज डाउन. आप अगेन वही फॉल्टी डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं. अगर आप गिविंग बिहेवियर्स में इंडल्ज करेंगे तो देन यस, व्हाइल इट मे prove to be a bit stressful in the short run because you feel like आपको दूसरे बंदे से वो response नहीं मिल रहा, you might actually benefit from it in the long run. So इसके अंदर यही, and you will benefit from it in the long run because आप faulty decision making में indulge नहीं कर रहे. You are not making decisions that are going to be biased. So we must understand कि पॉज करना, अगेन पहले तो हम लोग वो शॉर्ट टर्म बिहेवियर्स को देखेंगे कि पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, देखें कि आप डिसीजंस किस तरह से बना रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग किन किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके बाद वी स्टार्ट असेसिंग कि यार हम लोग किस तरह के बिहेवियर्स में इंडल्ज करते हैं. अपनी इंटेंट एक्सप्लोर करें. अगर आपकी इंटेंट साफ होती है, आपकी नीयत साफ होती है, देन चांसेस आर दैट आपका दिमाग हर दफा खुला ही रहेगा और आपको ये वाली फीलिंग्स नहीं आएंगी. ये जो फीलिंग होती है ना कि यार मुझे तो अपनी नेकी का कोई सवाब नहीं और कोई सिला नहीं मिल रहा है इस वक्त, ऐसी बात नहीं है. सिला भी मिल रहा है और अल्टीमेटली इट विल पे ऑफ in the future as well. So I hope I've answered your question also. So again, this is something that I mean, it's a dilemma. जाहिर सी बात है, हमें ये लगता है कि यार हम क्यों अच्छाई करते रहें और हम क्यों इतना कुछ करें लोगों के लिए जब उसका कोई हमें अजर ही नहीं मिलेगा. And that does happen. It does happen. But you need to reassess yourself and your process of decision making. You need to see कि ये behavioral change मेरे अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है. क्या मैं भी बाकी सबकी तरह हूँ? Do we really want to be like other people around us? This is something that we need to find out for ourselves.
Lastly, I think what I'd like to talk about, and then I think अगर कोई और सवालात आते हैं तो I'd love to take them on. I'd like to talk about another model, जिसमें it basically talks about how we are supposed to communicate with other people and ensure कि हमारा ये जो conversations है, हमारी जो communication है, उसमें कहीं भी bias ना आए. So it's kind of like a diversity checklist also, and an inclusion checklist also, जिसमें आप इंश्योर ये कर सकते हैं कि अगर आपने इन 5 पॉइंट्स, अभी मैं इनके बारे में आपको मजीद और बताऊंगी, कि अगर इन 5 पॉइंट्स को आपने फुली ग्रास्प कर लिया, एंड इफ यू ऑलवेज हैव देम एट द बैक ऑफ योर माइंड, then hopefully your conversations will not be biased, and hopefully you'll be able to see through the person and see the more important things in a person, such as their personality and their capabilities, and judge them on the basis of that as opposed to anything else. So this is a model by Dr. David Rock. He's a famous neuroscientist, and उन्होंने ये model basically बनाया है. It's called the SCARF model. It was introduced to me by a very dear colleague of mine also, and ये SCARF model जो है, it essentially denotes the way you are supposed to conduct different conversations. So SCARF again stands for, S stands for status, C stands for certainty, A stands for autonomy, R stands for relatedness, and F stands for fairness. तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट आता है, दैट इज स्टेटस. अब इस दुनिया में जो भी इंसान है ना, चाहे वो माली है या चाहे वो सीईओ है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ सेल्फ वर्थ. उसकी अपनी एक इज्जत होती है सोसाइटी के अंदर. एंड अगर आप उनसे इस तरह से उनके प्रोफेशन को दिमाग में रखते हुए उनसे बात करेंगे कि माली से आपने बदतमीजी से बात की और सीईओ से आपने बड़े अच्छे से बात की, सो देन व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट यू are not fully being true in that conversation. आप उनकी कैपेबिलिटी और उनकी अपनी सेल्फ वर्थ को इस वक्त नहीं देख रहे, आप उनके एक्सटीरियर को देख रहे हैं. सो हाउ यू एसेंशियली स्पीक टू पीपल, are you keeping their concept of status and self-worth in your mind when you speak to somebody? That is very important. And if you are going to move away from that concept, then you are actually indulging in exclusive behavior. एंड अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को embrace कर रहे हैं और आप उसके स्टेटस को दिमाग में रख रहे हैं, then you are going to indulge in inclusive behaviors. Again, that's the status bit. उसके बाद आता है certainty का concept. Now the example that I like to use in explaining this is कि especially जब मैं अपनी बेटी का दाखला करा रही थी schools में जाके, तो बहुत दफा ऐसे टीचर्स होते थे जो आपको कहते थे कि यार आप लोग जो है ना बहुत जज्बाती हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, एंड हम लोग को पता है we've been in education for that long. Now just look at that conversation. You're actually telling me about parenting my child and how whether I even know my child at all or not, right? अब यही बात अगर वो थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से करती तो शायद मैं उनकी बात सुन लेती, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि I might not even know anything about the education sector because you know कि आपको ये सारी चीजें पता है और मुझे कुछ नहीं पता अपनी औलाद के बारे में, तो then naturally you are putting me on a back foot. तो मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ माई चाइल्ड इज वेरी सर्टेन एंड इट्स वेरी इनग्रेन्ड इन माई माइंड. अगर उस कॉन्सेप्ट को आप जरा सा भी हिलाने की कोशिश करते हैं तो यू विल लूज आउट ऑन दैट इक्वेशन विद मी. सो अगेन, लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं अबाउट द वर्ल्ड दैट आर वेरी इनग्रेन्ड एंड दैट आर वेरी सर्टेन. इफ यू आर गोइंग टू क्वेश्चन दोस कॉन्सेप्ट्स इवन इनडायरेक्टली, अगर आप उनको क्वेश्चन करते हैं, तो यू आर अगेन मूविंग टुवर्ड्स एक्सक्लूसिव बिहेवियर्स. Again, so we have the third letter, which is A, stands for autonomy. So again, autonomy is your control over something. तो इसमें यूजुअली ये होता है कि टेक्नोलॉजी को लेके जाहिर सी बात है हमें लगता है कि नई जो पौध है या नई जो जनरेशन है, they'll be better in technology. But there are lots of people and a lot of organizations जो एक काम बड़े अरसे से कर रहे हैं और उनको लगता है उनका इस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल है. अगर कल को कोई नया बच्चा आता है उनके पास जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही चीता होता है और वो ये बोलता है कि आपको ये बात नहीं पता किस तरह से करनी है, मैं आपको बताता हूँ कि ये बात किस तरह से करनी है या ये चीज ये काम किस तरह से करना है. सो उसके अंदर ये होता है कि आपने इनडायरेक्टली उस इंसान की आपने ऑटोनॉमी को चैलेंज किया. यही बात, हाउ कैन यू वर्ड इट डिफरेंटली, हाउ कैन यू वर्ड इट इन अ वे दैट स्टिल रिस्पेक्ट्स हिज कैपेबिलिटी इन अ सर्टेन डोमेन. अगेन, आप अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यू विल बी इंडल्जिंग इन एन एक्सक्लूसिव बिहेवियर. उसके बाद
जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेडनेस. सो दैट्स आर ऑफ द स्कार्फ acronym. So fairness is basically relatedness is basically the concept of psychological safety and how vulnerable you can be in a group setting. तो कैन यू ओपनली वॉइस आउट व्हाट यू वांट टू से. आप ऐसा तो नहीं है कि अपने ओपिनियन को अपने पास रख रहे हैं बिकॉज आपको खौफ आ रहा है या आपको डर लग रहा है कि यार मैं तो आई कैन नेवर काइंड ऑफ वॉइस माय ओपिनियन इन दिस ग्रुप. अगर आपको ये डर लग रहा है दैट मीन्स the concept of relatedness does not exist in that group setting or in that community. In order to ensure कि आपकी वो honest और open conversation हो, we need to make sure that there is relatedness within that group. So what are some of the things that we can do as thought leaders, as business leaders in order to ensure that there is more and more relatedness within our group, ताकि लोग जो हैं more and more they are able to voice out their opinions and they do not refrain or hold back from it. The last part and the last letter of our acronym of SCARF is fairness, which is very easy to understand. कि आप कोई फालतू में कोई तजाद तो नहीं कर रहे हैं दो लोगों के बीच में. आर यू fully gauging them or are you fully conversing with them on the basis of their capabilities? आप किसी को unnecessarily favor तो नहीं कर रहे हैं. Are you just towards both parties? Are you just towards yourself in the process? Again, scarf एक ऐसी चेकलिस्ट है कि अगर आप इसको at the back of your mind, if you keep practicing it, if you keep thinking about it before indulging in any conversation, chances are कि आप उस conversation को fully accept कर लेते हैं and chances are that उस conversation की वजह से you refrain from having or indulging in any kind of faulty decision making. अभी एक सवाल आया था ऑन द स्क्रीन के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज इट अ मिथ. एंड आई थिंक yes, is the concept of unity in diversity only on paper and not in spirit? Is unity a myth? I think this is what I started. Shumaila, thank you for your question. This is what I started with initially as well. Session का मैंने आगाज ही इस चीज से किया था कि ये लगता तो बड़ा प्यारा है when we write it on paper, unity and diversity. It's बहुत ही patriotic concept and I think it's something that fits very well because आज हमारे यौम आज़ादी का दिन भी है and all of that. It is a concept that if we want, we can bring to life. Yes, पेपर पे हम सब अग्री करते हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए, लेकिन इसको फुली एम्ब्रेस करना is not always easy because as a nation, as a group, as people, we are designed to reject the concept of diversity. लेकिन अगर आप स्टडीज देखें, लेकिन अगर आप जरा जाएं और अपनी रिसर्च करें तो यू विल कम टू फाइंड आउट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. लोग ये कहते हैं कि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल कोहेजन. आफ्टर कोविड-19 अगर हमें इकोनॉमिक रिकवरी चाहिए तो देन वी विल नीड टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन डीएनआई पॉलिसीज. So it is not just a concept which is on paper because it has proved its merits also to us. अगर आप even if you look at leadership right now, leadership जो चल रही है दुनिया के अंदर, women and men are both proving to be good leaders in the face of adversity. आप जसिंडा आर्डन जैसी लीडर्स का एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो आपको पता है ये बात चलनी लगती है कि यार अच्छा ओके देयर एवरी I mean it's not just a male versus female situation. A man can be a good leader and a woman can be a good leader also. So but it's all about us trying to open our minds. हम अपने दिमाग को किस तरह से खोल सकते हैं. अगर आप अपने बायसेस की तरफ बार बार जाएंगे, अगर आप अनकॉन्शियसली अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, हर दफा इंट्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो नेचुरली यू आर गोइंग to fall behind, going to be making decisions that are on the basis of data and concrete evidence and all of that. तो इसलिए हमें ये जरूरी है कि we are able to kind of refrain from those biases and accept. हम जब तक वो एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा. It's as simple as that. Okay, मारिया का सवाल है, could you unpack more in regard to vocalizing your concerns without challenging people's autonomy? Yes, you can. Absolutely, Maria. Thank you for your question. You can. Again, it's the way you word something.
इट्स द वे यू, so जब मैंने वो स्टेप्स आपके साथ शेयर किए थे कि शॉर्ट टर्म में हम क्या क्या मुख्तलिफ स्टेप्स ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हम अपने अनकॉन्शियस बायसेस की तरफ ना जाएं, आपने एक पॉज लेना है. You have to pause, you have to reassess, you have to reanalyze your entire decision process. तो जब भी आप किसी की ऑटोनॉमी को इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर सकते. If you're going to just just be very abrupt about it and not respect a person's experience, then naturally आप autonomy, किसी की autonomy की उसको question कर रहे हैं. You need to ensure that they are respected in the process. You can आराम से उनको समझा सकते हैं, लेकिन आप वो किस तरह से समझाते हैं, way or words. Linguistics का हमारे दौर में और मेरे ख्याल से मुख्तलिफ दौर में, I mean, we need to understand the role that linguistics play. अगर linguistics का हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो we will lose out on any conversation. So autonomy, किसी की autonomy, किसी की control को violate करना या फिर उनको ये बताना कि यार आपको क्या पता, वो बंदा वो काम कर रहा है इतने सालों से, तो अगर आपने उनको किसी भी तरीके से hurt किया in the process, then naturally you will lose out on a conversation or a potential relationship with that person, which is not something that you want. Again, I think the crux of this entire discussion is how we can bring about behavioral changes in order to embrace diversity and ultimately unite in diversity. So unity and diversity, I think it's up to you. I think यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल था कि is it just a concept which is on paper? um, it's a concept on paper if you say that it's a concept on paper. अगर आप चाहें तो there is a lot that we can do in order to ensure कि हम लोग इस diversity को सिर्फ accept और acknowledge नहीं करें, मगर इसको celebrate करें और इसको leverage करें. Because again, nations that, I mean, it's very easy to fight on things that are different, and it's very easy to fight on aspects that are different about us. But just think, अगर हम उनके benefits को निचोड़ें, अगर हम देखें कि diversity और differences की वजह से कितनी मुख्तलिफ चीजें कैप्चर हो रही हैं और कितनी मुख्तलिफ चीजें हमें समझ में आ रही, कितने मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यूज आ रहे हैं हमारे पास, एंड उनके बेसिस पे हम यूनाइट हो जाएं, so we will be a force to be reckoned with. And that is what ultimately all of us have to aim for. So if we're not going to aim for that in the future, then naturally we will fall behind. Um, so yeah, if there are any more questions, please do feel free to sort of, I think we have about 5 minutes. So agar koi bhi aur aapke sawalat ho, how can we initiate the D&I agenda in a company? Okay, so for this, first off, we need to again, there are different ways of doing it. DNI ka agenda ab kya hai? Naturally, for different organizations, it is going to vary. DNI ka agenda, and this is something that I talk about in multiple sessions also. And it's not just कि आप number को भरो कि यार इतनी diversity, इतना diverse, इतने ज़्यादा लोग होने चाहिए, इतनी ज़्यादा ख़वातीन होने चाहिए, disabled लोग इतने होने चाहिए. That's not what we want to aim for. What we want to ultimately aim for, and I think that's the core and the essence of today's session also, is कि आपने उनको incorporate तो कर लिया अपने workforce के अंदर, but how are you going to make sure that they are included in everyday life? So diversity and inclusion essentially are two different words also. So I think मेरी mentor हैं शिरीन नकवी, उन्होंने ये बात बोली थी कि diversity is when you are asked or invited to a party, and inclusion is when you are asked to dance. So are you indulging in those behaviors where you include people to give in their opinions to make those crucial decisions? Are you including everybody in that overall decision making process? Do you think people can be so open-minded? That's a very, very subjective question, Shams, because I would like to think, yes, I would like to think कि लोगों को अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है, because again when I was talking about the intent model also, आपका दिमाग तभी खुलता है when you stop thinking
about yourself, and you see कि how can you be an agent of change, and how can you indulge in behaviors that are going to be beneficial for other people. So if you don't engage in those behaviors, तो आपका दिमाग कभी भी नहीं खुलेगा, and you will ultimately आप वही पुरानी decision making और वही thought process के पीछे चले जाओगे, आप उस change को कभी भी embrace कर ही नहीं पाओगे. So the idea is to ensure कि आप उन behaviors में करें. And I think सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ DNI efforts के हवाले से, diversity के हवाले से, again, I think I have reiterated this across the session, that it is something that we are designed fundamentally as human beings to reject, because we are in a familiar and because familiarity और similar जहाँ पे attributes आप देखते हैं, आप उन लोगों के पीछे भागे भागे चले जाते हैं. लेकिन द प्रॉब्लम इज यहाँ पे आपकी ग्रोथ आके रुक जाती है, यहाँ पे आपकी नेशन की ग्रोथ आके रुक जाती है, यहाँ पे एज पीपल वी विल फेल टू अल्टीमेटली एक्सेल. अब विद कोविड-19 वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास कितने मुख्तलिफ चैलेंजेस आए. वी हैड टू थिंक डिफरेंटली. वी कैन एंड वी रियलाइज्ड कि आफ्टर दिस हम लोग शायद सेम तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. वी विल हैव टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू डू सो. एंड अगर हम डाइवर्सिटी को ही हर दफा रिजेक्ट करते रहेंगे और अपने दिमाग को बंद किए रहेंगे, तो देन वी विल नॉट बी एबल टू डू any of those things. And like I said, we gravitate towards people and ideas that resonate with our own ideas. तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि is that always the best thing. शुमाइला का एक और सवाल है, would you suggest to teach our children to understand the concepts of diversity? Yeah, I think this is a very interesting book, because I also have a 4-year-old, and उसमें यही होता है कि हम कोशिश आजकल let them go out and kind of do their thing and indulge in different kind of activities and engage with different people. तो ये मुश्किल हुआ है, because obviously we're trying to go for social distancing and all of that, and I think that's one of the downsides of this entire COVID situation. But उनको इस चीज को समझाने की हमें बहुत बहुत जरूरत है, बिकॉज अगर वो डाइवर्स लोगों के साथ engage नहीं करेंगे, तो then as people they will not become holistic individuals. So I think there's things that we can do. I think it's stuff that we teach them कि किस तरह से आपने लोगों से बात करनी है, वो जो बेसिक हमारी वैल्यूज हैं. I mean, अगर आप उस scarf को भी, I mean, if you were there, Shumaila, when I was talking about the scarf model, if you just teach them those basics about people for not their profession, but respecting them as individuals and learning from them consistently. If we reinforce those ideas in our children कि किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करनी, just because वो आपसे मुख्तलिफ दिखते हैं doesn't mean कि आप उनसे इस तरह से बात करें. सबके साथ अच्छे तरीके से आपने बात करनी है. अगर आप कॉन्स्टेंट इन्फो, और आप सबसे पहले खुद करें. देखिए, मतलब बच्चे आप ही को देख रहे हैं, so it's a learning by doing वाली चीज. आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी कभी भी नहीं करेंगे. तो वही सारे सवालात जो आ रहे हैं ना कि हाउ कैन वी बी सो ओपन माइंडेड, एंड किस तरह से हम लोग, मुश्किल होता है, एंड वी कॉन्स्टेंटली कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स फॉर पीपल, एंड हम लोगों के लिए इतनी चीजें करते हैं लेकिन हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिलता. So these are again deep rooted concerns that we have, and these are concerns that we cannot project on our kids. बिकॉज अगर हम यही कंसर्न्स अपने बच्चों पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कभी भी डाइवर्सिटी को फुली उसके ना बेनिफिट से भी मरहूम रहेंगे, एंड दे विल आल्सो मूव टुवर्ड्स things that are just familiar and safe for them. So the more we act and the more we engage in conversations and we engage in conversations and things with people that are different to us, the more they are likely to do so as well. So that would be my take on the matter. I hope I've been able to answer everybody's questions that are over here. Thank you so much again for everybody's time, everybody that took out the time to log in. I know hamari chutti hai aaj aur sara kuch, but again, I firmly believe that learning never stops. So I hope I've been able to share some tools, some techniques, some things, and some behaviors that we can engage in the short run to be able to benefit in the long run. And inshallah हमें ये कोशिश करनी है. आज एक ऐसा दिन है where we need to, I strongly feel that we need to think about this. Okay, can we really be united in diversity? Our country is rich in diversity. It has different, ethnic groups. It has different people. हमारी सोचने की भी बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं. लेकिन अगर हम
उन डिफरेंसेस के ऊपर हम लोग अगर उसमें से स्ट्रेंथ को निचोड़ें, तो देन आई एम क्वाइट श्योर दैट वी विल बी इंशाल्लाह बी एबल टू यूनाइट in diversity. So thank you very much. Thank you so much for engaging with me today. Thank you so much for your questions, and hopefully we'll meet again through some other platform. I would love to thank TRG also at this point in time. आप लोगों ने मुझे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने का मौका दिया which is very close to my heart also, and on such a fantastic day. So thank you very much, and inshallah we'll meet again very soon. Take care. Allah Hafiz. वो रौनकें बाजारों की, वो रोशनियां शहरों की, वो अचानक बढ़ते फासले, वो यकदम लगते ताले। अब क्या पूछिए, कौन क्या कहे, वो शब व रोज के कह कहे। तो ऐसे में फिर एक दूसरे से रेस लगाना क्या, आज को ऐसे रोना क्या, कल से फिर यूं डरना क्या। दिल की आंख से देखेंगे तो जान लेंगे, शहर अब होने को है, शहर अब खुलने को है, शटर उठने को है, फासले सिमटने को है। जिंदगी फिर मुस्कुराएगी, कुर्बानी रंग लाएगी। आजाद था आजाद रहेगा, आबाद था आबाद रहेगा, हर दिल हर जान पाकिस्तान।